We have discussed about torque in Cartesian and polar coordinate system and also angular momentum. And angular momentum already I told you it is L is equal to R vector cross P vector, that is R P sine phi or sine theta. And the formula for L is xpy minus ypx. This is Lz. So if you find, or if you look here, you can find that force is replaced by P. So tau is again same, देखिए x fy minus y fx. So linear momentum is replaced by force. So you have to discuss linear momentum not only in Cartesian but also in polar coordinate system. Now, surely there will be a relation between L and torque. So we are finding now today, first of all, relation between L and tau. So we know what is L and what is tau. So as L equal to xpy minus ypx. Correct? Now, if you want torque, it means force should be there. So, how we are writing here force in place of linear momentum? So, Newton's second law of motion, we know that the rate of change of momentum is equal to the force. Okay, so, but it is difficult to write here force because dp by dt is equal to f, and here we don't have the dy by dt. So better we should start from torque. We know this. यहाँ लिख देते हैं as we know tau is L is this. So I am starting from tau. Also tau is equal to x fy minus y fx. This is tau z. So force is dpy by dt and this force is dpx upon dt. So देखिए dy by dt taken out. So this is xpy minus ypx. This is equation number 1, and from here it is clear that in place of xpy minus ypx we can write L. So from equation 1, tau is equal to dl by dt. It means torque is equal to the rate of change of angular momentum in rotational motion, whereas in linear motion force is rate of change of linear momentum. So look here, there is a symmetry here, they are symmetrical. Here force is replaced by tau, so linear momentum is replaced by angular momentum. So maybe we can write a statement here. Torque is equal to rate of change of angular momentum. Rate of change of angular momentum. Right? Sometimes angular momentum is known as moment of momentum. Remember this. Many a times it is asked in the examination. What is moment of momentum?
So moment of momentum is angular momentum, and what is rate of change of angular momentum? That is torque. So this is the relation between torque and angular momentum. Okay, मेरी स्क्रीन फ्रीज हो गई है क्या? नहीं सर ठीक है। नहीं सर चल रही है, ठीक है। चल चल रही है, मुझे दिख नहीं रहा, मेरे लिए फ्रीज हो गई है। ठीक है, तो इसको मैं रब कर रहा हूँ। एक मिनट है, इसको क्या हो गया यार, फ्रीज क्यों हो गई? हाँ हो गया सर 2 मिनट, सर 2 मिनट। हाँ ओके। They are similar, only there is a difference that in linear motion, motion is in a straight line, and in a rotational motion it is rotate about an axis. So all the quantities just they are similar. It means if force is there, torque is there, linear momentum is there, angular momentum is there. Mass is also there, and you know very well mass is the inertia in linear motion. More mass, more inertia. That is the inability of a body to change its state of rest or motion or direction of motion. Similarly, there should be a quantity in rotational motion which should be rotational inertia of motion. And that quantity is very, very important here. Today we are going to discuss moment of inertia. It is very important quantity, सभी से related है. So suppose you have a body here. This is a body, and suppose this is y-axis, this is x-axis, and this is z-axis. Because body is rotating about z-axis with angular velocity omega and angular acceleration alpha also. If you want to write, you can write. The number of particles are here. This is first particle. Its distance from the axis of rotation is r1, its velocity is v1 and acceleration is a1 and mass is m1, right? Similarly, we have second particle here m2. Its velocity is v2, acceleration is v2, distance is r2. Number of particles are here. एक और particle ले लेता हूँ n, mn. So its velocity is vn and distance from axis, अब ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है ना, दिक्कत आ रही है मुझे। एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस नहीं आ रहा, ये आएगा, ओके। दिस इज आर एन, ये था v2, दिस इज vn, दिस मास इज mn, करेक्ट। नाउ again look here. This is a rigid body and which is rotated about the z-axis with angular velocity omega and angular acceleration alpha, and it consists of n particles. Number of particles are there. Let mass of first particle is m1 and its distance from the axis of rotation is r1 and it is rotating with linear velocity v1 and linear acceleration a1. डायग्राम बड़ा बना दूं? अच्छा, डायग्राम बड़ा बना दूं? अच्छा, चौक दूसरा ले लेता हूं, चौक शायद सही नहीं, डायग्राम भी बड़ा बना देता दोबारा। सर कैमरा पास ले जाओ ना। कैमरा पास ले जाओ, कितना पास लेके जाओ? हाँ सर अब सही। ठीक है, यस सर। okay. So this is perpendicular distance from axis of rotation, the first particle of mass m1 and linear velocity is v1 and acceleration is a1. This is second particle m2, distance is r2 and its velocity is v2 and number of particles are there. So last particle मैंने लिया
and velocity is Vn and mass is Mn and distance from axis of rotation is Ra. Okay. And it should be clear that their linear velocity is different. Linear velocity of each particle is different. Linear acceleration of each particle is different. But the angular velocity and angular acceleration of whole body is same. That is omega and alpha. That should be clear. Now, the moment of inertia here is equal to m1 r1 square m2 r2 square plus mn rn square, or we can write it is mi ri square, where I is equal to 1 to n. So if you have to find moment of inertia of this whole rigid body, then it is equal to the sum of the product of, it is equal to the sum of the product of each individual mass with square of the perpendicular distance from axis of rotation. And this moment of inertia is rotational inertia. It is rotational inertia, and it plays the same role in rotational motion as mass plays in linear motion. Whatever be the role of mass in a linear motion, the same role here moment of inertia plays in rotational motion. And in linear motion, you know very well, if mass is more, then you know very well, moment of inertia is also more. Sorry, mass is more and inertia is also more. So here also if moment of inertia is more, then inertia, rotational inertia is more, and the body can rotate for a longer time, longer duration, and the motion is jerkless. So on which quantity our moment of inertia depends? ये आप समझ गए होंगे. m1 r1 square plus m2 r2 square plus mn rn square. So I am writing here summation, and मैंने इसको क्या लिख दिया देखो, mi ri square, and I is 1 to n, from 1 to n. तो अगर 3 पार्टिकल है तो 3 बार आ जाएगा, 4 है तो 4 पार्टिकल्स ऐड हो जाएंगे, 5 है तो 5. Now moment of inertia depends upon किस फैक्टर पे आपको दिख ही रहा है. नंबर 1 मास, कितना मास है, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड मास ऑफ पार्टिकल्स और मास ऑफ द बॉडी. हम कुछ भी कह सकते हैं दोनों में से, जो भी आपकी. मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेज द सेम रोल in rotational motion as the mass plays in linear motion. So moment of inertia depends upon, किस पर डिपेंड हो रहा है, या दिख ही रहा है हमको, mass of particles and perpendicular distance from axis of rotation. And the third point which is very very important here, कि मास तो इम्पोर्टेंट है ही, रेडियस भी इम्पोर्टेंट है, या डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हाउ दैट मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड अबाउट एक्सिस. मान लीजिए मास ज्यादा है और वो एक्सिस के पास है, तो आपके फायदे का नहीं है, बिकॉज परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज लेस. इफ इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अवे फ्रॉम द एक्सिस, देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज मोर. Just like in cycle, you have seen, in cycle, this is rim of the cycle and this is axis. These axis and rim, they are connected by spokes,
जिसको हम ताड़ी कहते हैं, ठीक है. So here mass is more. It means the distance from the axis of rotation is more, so its moment of inertia is more. So it can rotate for a longer time. आपने देखा होगा बड़ा पहिया होगा तो ज्यादा देर तक घूमता है, छोटा पहिया होगा जब आप छोटे थे तो आप छोटी साइकिल चलाते थे तो कितनी जल्दी जल्दी पैडल मारते थे तो भी थोड़ी सी दूर पहुंचते थे, और जब आप बड़ी गाड़ी साइकिल पर आ गए तो देन थोड़े से आपने पैडल मारे फिर आराम से बैठ के भी जाते कई बच्चे इधर, because inertia, moment of inertia is more, and if moment of inertia is more, it can rotate for a longer time. Also, you have seen flywheels, ऐसे बड़े बड़े wheels होते हैं. अभी if you have seen a race, cycle race, तो साइकिल ऐसी होती है इसमें यहाँ पूरी जगह कुछ लगा हुआ है, पूरा कवर है ये, जस्ट लाइक ए पापड़, पापड़ की तरह. तो why? In order to increase moment of inertia, if moment of inertia is more, it can rotate faster and for a longer time, and also without any jerk. Jerk भी नहीं आता. So third point is very important. The distribution of mass. The distribution of mass. Yeah, the distribution of particles about axis of rotation. The distribution of mass about axis of rotation. So moment of inertia is very important. Again, listen very carefully. If moment of inertia is more, then the body can rotate for a longer time and the motion is jerkless. So sometimes it was asked in the examination, in flywheel the most of the mass is at the rim. Why? Because most of the mass is at the rim here. So that what happens? Mass is away from the center, that is from the axis of rotation. So R increases, as R increases, moment of inertia is also more. And if moment of inertia is more, then it can rotate for a longer time. जैसे you have seen that कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन बनाता है तो ऐसे गोल होता है उसका चाक, और वो बीच में ऐसे करके उसको एक बार घुमा देता है, फिर उसे ऐसे करके बर्तन बनाता है. आपने देखा होगा दिए. कई बच्चे वहां जाते हैं जब तो उनके साथ बैठ के वो हाथों से बनवाता भी है तो बच्चे बड़े खुश होते हैं बनाते हैं. वो काफी देर तक घूमता है विदाउट एनी मोटर. व्हाई? बिकॉज mass is more and also most of the mass is where at the rim, and so radius is more, and if radius is more then it can rotate for a longer time due to more moment of inertia. तो बड़े बड़े व्हील इसलिए लगाए जाते हैं जो घूमते ही रहते हैं, घूमते ही रहते हैं. And spokes are there in the cycle, in the bicycle wheel to increase moment of inertia. Okay, तो moment of inertia का importance आप समझ गए. इसका रिलेशन भी होगा किसी ना किसी से. And also you know very well, if there is a kinetic energy in linear motion, there should be surely a rotational kinetic energy. वो भी होनी चाहिए. And rotational kinetic energy depends upon which factor we have to find. Rotational kinetic energy means if body has a kinetic energy, it can rotate. Okay. So I am finding now rotational kinetic energy. Rotational kinetic energy. Actually, this is the first time I am giving you rotational kinetic energy derivation so small. Otherwise, always I was deriving in a different manner. एक एक पार्टिकल लेके मैं करता था, पर ठीक है इस साल आपको छोटा बता देते हैं. So rotational kinetic energy के लिए we have to consider a body first of all. Okay. So consider a rigid body of mass capital M, total mass ले लिया मैंने, and R is the distance
from the axis of rotation. Correct? Now the rigid body is surely moving with velocity v, and so it has a kinetic energy half mv square. Let body is rotating with linear velocity v, linear acceleration a. अब आप कहोगे एक्सेलरेशन की क्या जरूरत है, ये हर बार काम आ जाएगा इसलिए लिख रहा हूं. Angular velocity omega and angular acceleration alpha. So this is now common for every derivation. सभी में यही लिखने वाला हूं. So the kinetic energy possessed by body is, so kinetic energy का फार्मूला आपको पता है, यहाँ करता हूँ. It is kinetic energy during linear motion and we need kinetic energy in rotational motion. In rotational motion we don't have, we are not using v, we are using omega. So as v is equal to omega r, therefore k is equal to 1 by 2. m कैपिटल भी कर सकता हूँ, स्मॉल भी कर सकता हूँ, या मैंने कैपिटल ले लिया, इसको स्मॉल ही कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो. ठीक है, हाफ m इंटू ओमेगा आर स्क्वायर. काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर. नाउ व्हाट इज एम आर स्क्वायर? एम आर स्क्वायर इज नथिंग बट इट इज moment of inertia. It is moment of inertia. So this is now kinetic energy E rot. E rot means E rotational half I omega square. It means rotational kinetic energy is directly proportional to I and directly proportional to omega square. So look here, it is clear now. The kinetic energy is also depend upon moment of inertia. If moment of inertia is more, then body possess more kinetic energy. इसीलिए स्पीड भी ज्यादा हो जाएगी, kinetic energy ज्यादा है तो inertia ज्यादा है तो it increases speed also, maybe not increases but maintains the speed. It maintains because ये oppose करेगा any change in the position of the body. So rotational kinetic energy is half I omega square. I think it is clear now. Now we have to find a relation. ये मिटा दूं इसको? Yes, sir. The relation between L and I, tau and I. L and I निकालूं पहले कि tau and I निकालूं? चलो tau and I निकालूं. Tau and I. So consider a rigid body. This is same now for everyone. You can write. And now how to find a relation between tau and I? So what is tau? Everybody knows. Tau is r into f. तो अभी तक तो I का कुछ समझ में नहीं आ रहा. ओके, एंड f is mass into acceleration. अभी भी समझ में नहीं आ रहा. So acceleration we know A equal to alpha r होता है. A equal to alpha r. कई बच्चे इसको बोलते हैं अल्फा हार. अल्फा हार मतलब पता है ना आपको? नाश्ते को महाराष्ट्र में नाश्ते को बोलते हैं अल्फा हार. शॉप्स भी अपने रवि अल्पाहार नगर निगम के सामने है, जिसके वहाँ प्याज की कचौरी मिलती है. सो अल्पाहार में यही अल्फा आर एंड एम का एम एंड आर इंटू आर इज आर स्क्वायर इंटू
अल्फा, जैसे आपको mr² दिखता है आपकी आंखें चमकने लग जाती, बिकॉज इट इज आई। सो टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। तो आप देखिए tau is also directly proportional to I and alpha. It means more moment of inertia, more torque. टॉर्क ज्यादा इंजन में, इसीलिए हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज करेंगे तो टॉर्क हमको ज्यादा मिलेगा। सो दिस इज अ रिलेशन बिटवीन टाउ एंड आई। ओके, सिमिलरली surely there is a relation between L and I। सारी क्वांटिटी आएंगी कि हमारा इससे रिलेशन, हमारा जैसे किसी की शादी होती है, मान लो कृष्णा की शादी हो गई, तो उसकी जो वाइफ आएगी उसको सब लोग बताएंगे कि ये मैं तेरी बुआ हूँ, मैं तेरी फूफी हूँ, मैं तेरी सास हूँ, मैं तेरा ताया हूँ, मैं तुम्हारा देवर हूँ। तो ये सारे रिलेशन आई के साथ देखो बताएगा। तो ठीक है, एल क्या होता है? वी नो दैट एल इक्वल टू आर इंटू पी, आर इंटू पी। नाउ इसको ऐसे फॉर्म में लाना ताकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाए कहीं से। तो लाते हैं P इज m इंटू वी। तो V बोला कि मैं तो ओमेगा आर हूं, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग रोटेशनल मोशन, सो श्योरली वी नीड ओमेगा। सो L इज इक्वल टू mr² इंटू ओमेगा। और ये देखते ही फिर से आपकी आंखें चमकी और आपको पता लग गया, अरे वाह, व्हाट इज दिस? L is I omega। It means L is also directly proportional to I, and L already we know directly proportional to omega. It means moment of inertia, मतलब कृष्णा की जब शादी हुई तो उसकी बहू आई तो पूरे परिवार में खुशियां आ गई, उसने सबकी खुशियां बढ़ा दी। देखो टॉर्क की भी बढ़ा दी, एल की भी बढ़ा दी, काइनेटिक एनर्जी की भी बढ़ा दी, है ना। अब whenever there is a torque, then power is also associated with the torque. Okay, so don't take it otherwise Krishna है, I am joking only। ये तो तुम नाराज हो जाओ कि इस तरह मेरा नाम ले रहे हो। नो ओके, सर, नहीं बट ठीक है, तो कुछ तुम्हें खुशी हुई होगी, है ना। यस सर, अच्छा लगता है जोक आते हैं। ओके ओके, थैंक यू। मिटा दूं बच्चों, प्यारे बच्चों, मिटाऊं? यस सर। नाउ आपको पता है, अगर आपने कार वगैरह खरीदे आप लोग, तो यू नो वेरी वेल कि समटाइम्स वी आर जस्ट रीडिंग दैट हाउ मच टॉर्क योर कार इज गिविंग, इंजन कितना टॉर्क दे रहा है। तो हम ज्यादा टॉर्क वाली यूज करते हैं, टॉर्क ज्यादा अच्छा हो, बिकॉज व्हेन टॉर्क इज देयर देन पावर इज आल्सो मोर। इट मींस ऑलवेज पावर इज एसोसिएटेड विद द टॉर्क। तो कैसे है हम पता लगाते हैं? पावर एसोसिएटेड with torque, with torque power is also associated, and power means work upon time। तो वर्क वाला रिलेशन टाउ का है, हमें याद है। वी नो dw इक्वल टू टाउ डी थीटा, एम आई करेक्ट? एंड वर्क अपॉन टाइम इज पावर, सो डिवाइड बाय dt। So dw by dt is equal to tau d theta by dt, and this is average power, and tau या इंस्टंटेनियस पावर बोलते हैं, ऐसे एवरेज नहीं बोलते, सॉरी, इंस्टंटेनियस पावर इक्वल टू टाउ एंड डी थीटा बाय डी थीटा इज ओमेगा। सो पावर इज इक्वल टू टाउ ओमेगा। इट मींस इंस्टंटेनियस पावर इज गिवन बाय टाउ इनटू ओमेगा, कि कितना रोटेशनल मोशन की वेलोसिटी। नाउ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर a law that is known as law of conservation of angular momentum। मिटा दूं बच्चों ये? नो सर, वेट। वेट, यस सर।
आप लोगों के तो स्कूल खुलने वाले हैं तो आप बड़े खुश होंगे सब लोग। सर डेट 18 तो कब तारीख खुलने से। वाले हैं? 18। एटीन से। बस तुम्हारे। हाँ लेकिन इट इज ओनली फॉर 10th एंड 12th। अरे सर बच गए ना सर। हाँ तो सर। बाकी वो लोग सर बहुत बुरी खबर है, हमको भी आना था। वो भी जिसको आना है वो ऐसे आ सकता है, 12th वालों का नाम लिख के कि मैं 12th का हूँ, आ जाओ, उसमें क्या है। ठीक है ना, स्कूल घूम के चले जाओ, थोड़ा इधर उधर पानी पी लो, टॉयलेट कर लो थोड़ा, तो अच्छा लगेगा कि वाह वाह स्कूल का एक अलग ही बोले आनंद आया आज। आप आ सकते हो टिंकू से। सर हाँ टिंकू से आप लोग सैंडविच खा के घर जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर इस बार फाइनल एग्जाम्स ऑफलाइन होगी कि ऑनलाइन होगी? फाइनल एग्जाम तो ऑफलाइन ही होगी। मतलब 99.99% इट शुड बी ऑफलाइन। अब वो बहुत ज्यादा कुछ प्रॉब्लम हो जाए बिकॉज उससे पहले नाउ कोई एग्जाम है क्या अभी? उसके पहले हो सकती है एक आध आपका टेस्ट वगैरह कुछ, पर मुझे उम्मीद नहीं है। आई हेलो थिंक सर। नाउ देयर इज ओनली फाइनल। यस। सर लेस देन 1 मिनट बचा है। ऐसा है क्या? हाँ सर। कोई बात नहीं, ये हेडिंग तो डाल लो। कार्तिक रिकॉर्डिंग पॉज कर दे अब। ओके।